students, this lecture is for the course Software Architecture and Design, and the topic of today is design patterns, and we will discuss grasp patterns, general responsibility, assignment pattern. This is the part first, and some patterns will be discussed in this part, and the remaining patterns will discuss in part 2. Let's have a brief look at the outline of this lecture. We have discussed design patterns, gang of 4 design patterns, and in the previous lecture we have discussed singleton patterns. Today's lecture's outline is general responsibility pattern, general responsibility assignment, software patterns, grasp, and we will discuss information expert, creator, controller in this lecture, and some code examples. We always start with the motivational quotation, and today's lecture's motivational quotation is: there is only one corner of the universe you can be certain of improving, and what's your own self. मीन कि आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, और अपने आप को इम्प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अपने ही शोल्डर्स पर है. Grasp patterns guide in assigning responsibilities to collaborating objects. Grasp patterns are 9 in number. They are creator, information expert, low coupling, controller, high cohesion, indirection, polymorphism, protected variation, and pure fabrication. First of all, we come to know that what is responsibility. Responsibility can be accomplished by a single object or a group of objects collaboratively accomplish a responsibility. Responsibilities of an object are implemented in the methods of a class, और किसी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोई एक क्लास या किसी दूसरी क्लास के साथ कोलैबोरेट करके कंप्लीट करती है. ग्रास्प हेल्प्स इन डिसाइडिंग विच रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी असाइंड टू विच ऑब्जेक्ट और क्लास. Identify the objects and responsibilities from the problem domain, and identify how objects interact with each other. Define blueprint for these objects. Class with methods implementing these responsibilities. किसी भी एक ऑब्जेक्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम किसी भी एक क्लास के मेथड्स में इम्प्लीमेंट करते हैं, और ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके कोलैबोरेट करके उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैन बी डूइंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, doing something itself, create an object, process data, do some computations, and initiate and coordinate actions with other objects, and knowing responsibilities. Responsibilities of two types: knowing responsibility and doing responsibilities. These are implemented as get methods and set methods in object-oriented languages. Knowing responsibilities could be private and public object data, relate object references, think it can be derived. आई होप कि आप लोग गेटर्स और सेटर मेथड से पहले से फेमिलियर हैं. एक दो एग्जांपल्स आज हम दोबारा से देख लेते हैं. अब ये डू समथिंग, एक मेथड्स आप लोगों को पता है कि एक्सेसर्स और मॉडिफायर्स होते हैं. एक्सेसर मेथड्स नोइंग कहलाते हैं, और मॉडिफायर मेथड्स डूइंग कहलाते हैं, जिनको हम गेटर और सेटर से गेटर मेथड्स और सेटर मेथड से इम्प्लीमेंट करते हैं. यहाँ एक कोड एग्जांपल है. इसमें एक क्लास है कस्टमर, उसमें पैरामीटर लिस्ट में हम कुछ वैल्यूज़, कुछ पैरामीटर्स, कुछ वेरिएबल्स पास करते हैं, और ऐड डोमेन इवेंट नाम का एक मेथड है. अब ये एक डूइंग मेथड की एग्जांपल है, जिसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोई भी एक मेथड परफॉर्म कर रहा हो. यहाँ पे आप देखें कि डूइंग मेथड्स की कुछ और एग्जांपल्स हैं, जिस तरह से ऐड डोमेन इवेंट है, चेंज ऑर्डर है, में
اسٹیٹس کو، جو ڈوئنگ میتھڈز ہوتے ہیں وہ آبجیکٹ کی اسٹیٹ کو چینج کرتے ہیں، اور جو نوئنگ میتھڈز ہوتے ہیں مین گیٹر میتھڈز وہ جسٹ ڈیٹا کو ایکسیس کرتے ہیں. اس ایگزامپل میں اگر آپ دیکھیں تو گیٹ آرڈر ٹوٹل کے میتھڈز ہیں، ایڈ ڈومین ایونٹ کا میتھڈ ہے، یہ ڈوئنگ میتھڈز ہیں، اور جو ریٹرن ویلیو کو ریٹرن کرتے ہیں گیٹ آرڈر ٹوٹل ہے، صرف اور صرف ویلیو کو ایکسیس کر کے ریٹرن کر رہے ہیں، وہ نوئنگ میتھڈز ہیں. اب ہم پیٹرنز کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے ہمارا پیٹرن ہے کریٹر پیٹرن. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پیٹرنز پرابلم سولوشن پیئرس ہیں. who should be responsible for creating an instance of some class which کہ ہم کوئی بھی رسپانسبلٹی کسی بھی ایک کلاس کے انسٹانس کو انسٹینشیٹ کرنے کی رسپانسبلٹی کس کلاس کو اسائن کریں گے. یہ کریٹر پیٹرن ہمیں گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم ان گائیڈ لائنس کو فالو کرتے ہوئے ہم کسی بھی ایک کلاس کو اس کے آبجیکٹس انسٹینشیٹ کرنے کی رسپانسبلٹی اسائن کریں گے. اس کا سلوشن کیا ہوگا؟ کریشن آف آبجیکٹ از ون آف دا موسٹ کامن ایکٹیویٹیز ان an object oriented system. Which class is responsible for creating objects is a fundamental property of the relationships between objects of particular class. In general, class B should be responsible for creating instance of class A if one or properly more of the following apply. Instances of B contains or compositely aggregate instances of A. کلاس A رسپانسبل ہوگی کلاس B کے انسٹانسز کو کریٹ کرنے کی اگر کلاس B اسمبلی ہے اور کلاس A کے آبجیکٹس اس میں جو ریلیشن شپ ہے وہ کمپوزیشن کا ہے. If B contains A then B will be responsible to create instances of A. میں نے آپ لوگوں کو ایگزامپل دی تھی کہ if car aggregates engine then car is class B and engine is class A, therefore the class car will be responsible to instantiate the instances of class A mean engine. Instances of B records instances of A. Instances of B closely use instances of A. Instances of B have the initializing information for instance of A and pass it on creation. اگر یہ کنڈیشنز جو ابھی ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے سامنے ریڈ آؤٹ کی ہیں، اگر یہ کنڈیشنز ایگزسٹ کرتی ہیں تو کلاس B کی رسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ کلاس A کے انسٹانسز کو کریٹ کرے. لیٹس ہیو این ایگزامپل. آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ دس کانسیپٹ. کلاس ہے کسٹمر. وہ ایگریگیٹ کرتی ہے کلاس کسٹمر ایگریگیٹ کرتی ہے آرڈرس کو. تو دیر از نو آرڈر کلاس کوڈ ناٹ ایگزسٹ وداؤٹ کسٹمر. کسٹمر ہوگا تو آرڈرس ہوں گے. تو آرڈرس کلاس کے اگر انسٹانسز کو کریٹ کرنا ہو تو کسٹمر کلاس کی رسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ آرڈرس کی کلاس کو آرڈرس کے انسٹانسز کو کریٹ کرے. کسٹمر کلاس compositely aggregate orders, records orders, closely use orders and has initializing data passed by methods parameter. Ideal candidate for order creation. Customers class will
create the instances of order. इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट ये दूसरा पैटर्न है जिसको हमने इस क्लास में डिस्कस करना है, और ये किस तरह के प्रॉब्लम्स को डील करता है. व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल बाय विच टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू ऑब्जेक्ट्स. Solution: assign a responsibility to the class that has the information needed to fulfill it. जिस क्लास के पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उस क्लास की इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी क्लास में होनी चाहिए. In following example, customer class has references to all customer orders. कस्टमर ऑर्डर्स की रेफरेंसेस की इंफॉर्मेशन अगर कस्टमर क्लास के पास है तो कस्टमर क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐड ऑर्डर्स या चेंज ऑर्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कस्टमर क्लास के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर क्लास के अंदर ऑर्डर्स की इंफॉर्मेशन है. तो जिस क्लास के पास उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को मैनिपुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी क्लास में हो. दिस इज़ द मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल बिकॉज द ट्रुथ इट इज़ इफ़ वी डू नॉट हैव द डेटा वी नीड वी शुड नॉट बी एबल टू मीट द रिक्वायरमेंट्स एंड असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एनीवे. अगर हमारी क्लास के पास डेटा नहीं होगा तो उसको मैनिपुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके पास नहीं हो सकती. लास्ट जो पैटर्न हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे वो है कंट्रोलर पैटर्न. कंट्रोलर पैटर्न किस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है. बट फर्स्ट ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द यूज़र इंटरफेस लेयर रिसीव एंड कोऑर्डिनेट कंट्रोल्स ए सिस्टम ऑपरेशंस. यूज़र इंफॉर्मेशन से, क्लाइंट लेयर से जो इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसीव करेगा उसको who should first receive and control the information. Which object is responsible to receive and coordinate the information received from user interface layer. The solution क्या है? Assign the responsibility to an object representing one of these choices. Represent the overall system, root system, devices that the system is running within our major subsystem. Represent a use case scenario within which a system operations occur. The principal implementation depend on higher level design of our system, but journal we need always define object which orchestrate our business transaction processing. At first glance, the MVC controller in web application API is a great example, but for me it is not true. Of course, it receives input, but it should not coordinate a system operation. It should delegate it to separate service or command handler. MVC में और कंट्रोलर में यही डिफरेंस है कि MVC में एक कंट्रोलर ऑब्जेक्ट होता है जो यूज़र इंटरफेस और बिज़नेस लॉजिक के दरमियान कोऑर्डिनेट करता है और इनपुट्स को मैनेज करता है, जबकि कंट्रोलर ये कहता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सर्विस, एक कमांड हैंडलर के पास होनी चाहिए. दो एग्जांपल्स हैं, एक कंट्रोलर को यूज़ किए बगैर है और विदाउट कंट्रोलर है, और एक विद कंट्रोलर है. आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि एक मीडिएटर, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट, एक कमांड हैंडलर होना चाहिए कि जो मेडिएट करे बिटवीन यूज़र इंटरफेस लेयर एंड बिजनेस लॉजिक. इस तरह से ये जो हमारा डिज़ाइन प्रिंसिपल है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न, वो भी इम्प्लीमेंट हो जाता है. ऐड कस्टमर ऑर्डर कमांड हैंडलर, एक क्लास हम दरमियान में लिखें जो इनपुट्स को यूज़र जो कस्टमर्स की तरफ से इनपुट्स आएँ उनको कमांड हैंडलर हैंडल करे और फिर उसको डेलीगेट करे उन क्लासेस को
جو اس رسپانسبلٹی کو اچیو کرنے کے لیے لکھی گئی ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ کانسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا. وی آر اینڈنگ ود اے بیوٹیفل ورس آف میر تقی میر صاحب. وہ شوخ دشمن جاں اے دل تو اس کا خواہاں، کرتا ہے کوئی ظالم ایسی بلا کی خواہش. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ کچھ اور فردر ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں نے کچھ ویب لنکس اس لیکچر میں شامل کر دی ہیں. تھینک یو ویری مچ.